Okay, Jeet. The mobile tools and application for the interior designers. That's something which we were discussing. And the first, after the introduction, I told you this the softwares, and the first one which I discussed was the Google SketchUp. Google SketchUp is so simple and easy and user friendly है कि पहली चीज़ तो ये गूगल की तरफ से सारी की सारी प्रोडक्ट्स फ्री हैं. यू जस्ट गो टू द गूगल एंड लिखें गूगल के थ्रू search box में Google SketchUp, you find out the free version, and free version is lifetime के लिए that will be installed on your PC, और उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं either for your interior as well as your exterior as well as your kitchen and किसी भी तरह के interior design के लिए. And the additional advantage with this Google SketchUp tool is कि, like for example, as you can see, there's a model sitting there. Apart from this is some furniture, sofas, and things like these. सारी की सारी चीजें available. These all the things are basically free libraries of Google SketchUp. आप वहाँ से जाएं. You're not supposed to draw anything. आपने just design करना है. आपने डाउनलोड करें सारी की सारी लाइब्रेरीज, एंड लाइब्रेरीज को डाउनलोड करने के बाद आप उसको प्ले करें इसके साथ कि किस किस जगह पे. द सेकेंड एडवांटेज ऑफ यूजिंग गूगल स्केचअप इज कि ये जिस तरह ये जो शेप इस टाइम नजर आ रही है, दैट इज जस्ट द बेसिक जियोमेट्रिकल शेप, एंड देन फ्रॉम हेयर यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ काइंड ऑफ सेमी कलर्ड स्कीम, एंड सेमी कलर्ड से आप इसको डिटेल वर्जन में लेके जा सकते हैं जहाँ पे 100% क्लैरिटी के साथ आपको ऐसे फोटो रियलिस्टिक इमेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे which can be forwarded, which can be sent to your clients, कि वो इसको देखकर और इससे they can give you the projects also. The second tool after this is the floor planner, which I shared with you. Floor planner में the only disadvantage is कि ये perspective views आपको इतने नहीं देता. It is just a बिल्कुल 100% plan. 3D मोड इसका है तो सही, लेकिन 3D मोड इतना डिटेल नहीं है जितना गूगल स्केचअप का है. तो इट बेसिकली इज लाइक दिस वन. बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट फ्लोर प्लान्स हैं ये. बिल्कुल ऐसे ही इसके भी अंदर इसकी लाइब्रेरीज हैं. लाइब्रेरीज में से यू जस्ट पिक करते हैं, ड्रैग करते हैं, यहाँ पे प्लेस करते रहते हैं, रोटेट करके समवेयर प्लेस करते रहते हैं. सो दिस इज अ वेरी हैंडी एंड वेरी easy to use software for the floor planner. The third one is I discussed as the smart draw. Smart draw has the only disadvantage is it doesn't gives you a free version for the lifetime. Yes, smart draw is available only for a couple of days or maybe 7 or 10 days के लिए आपको free version available करता है. लेकिन in between these 7 or 10 days you can explore this complete software. The additional advantage with the software is कि जितना ये खूबसूरत इंटीरियर अंदर वाली साइड से काम करता है, ये लैंडस्केप्स के ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है. लाइक घर के बाहर वाली जितनी चीज़ें आपने डिज़ाइन करनी है उनके लिए भी दिस इज इक्वली गुड. दी फोर्थ वन इज़ द प्लानर 5D. आप में से वो तमाम लोग जो कि iOS के हैं, एप्पल मैकिनटॉश की प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उनके लिए दिस इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर प्लानर 5D. while using this software आप मोबाइल एंड आईपैड या एप्पल के लैपटॉप को यूज़ करते हुए आप इसको डाउनलोड करके वेरी इजीली यू कैन क्रिएट एनी ऑफ द डिज़ाइन एज पर योर रिक्वायरमेंट्स. द मोस्ट सिंपलर इज होम बाय मी. वेरी बेसिक सॉफ्टवेयर, बिल्कुल बेसिक कंपैरेटिवली. वैसे पिक्चर इज वे टू हाई, लेकिन एज सच इसकी क्वालिटी या आउटपुट इतनी अच्छी नहीं है जितनी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है ना. बट दैट इज a kind of basic again basic tool है जिसमें लाइन वर्क से और बेसिक चीज़ें कर सकते हैं. eDrawSoft I have already shared through my website, that is hameed.com, or I guess software के folder में you can find different links. उनमें से एक eDrawSoft का भी है. eDrawSoft basically not only gives you the leverage of creating interior design, लेकिन बिल्कुल 100% टॉप व्यू वाला ये पर्सपेक्टिव 3D वाले व्यूज इतने क्रिएट नहीं करता. लेकिन द एडवांटेज ऑफ दिस इज कि your associate architects, your associate electrical engineers who would be planning for this house की जितनी भी electrification या वो सारी की सारी चीज़ें कर रहे थे, everyone use this one software simultaneously. That is the best advantage of this. इसके अलावा now it comes to the mobile applications. आप में से वो तमाम
स्टूडेंट्स जो कि यूज़र फ्रेंडली नहीं है सॉफ्टवेयर्स के, कंप्यूटर्स के या पीसीस के, एंड दे वांट टू यूज़ द iPads एंड मोबाइल्स, उनके लिए दिस इज़ द प्रोडक्ट रूम प्लानर के नाम से है। दैट्स इज आइकॉन होम के नाम से। आप जाएं उसके ऊपर गूगल प्ले स्टोर पे एंड यू फाइंड आउट दिस मोबाइल एप्लीकेशन। द साइज इज क्वाइट बिट हाई एंड द रीज़न इज कि ज़रा इसके अंदर बने बनाए इस तरह के 3D मॉडल स्ट्रक्चर सारी की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और जस्ट अ ड्रैग एंड ड्रॉप सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी है जिसकी मदद से यू कैन क्रिएट एनीथिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। इसके अलावा दर इज अनदर 5D के नाम से, प्लानर 5D के नाम से है। इसमें भी बिल्कुल जिस तरह ये जो पूरी की पूरी लाइब्रेरीज हैं चेयर्स की और ये फ्लोर प्लान्स की, ये सारी की सारी जिस तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले फोटोशॉप में चीज़ें बनाई थी, इन्होंने भी बिल्कुल ऑलरेडी ये पैटर्न्स बना के रखे हुए हैं सारी की सारी चीज़ों के। आप उनको जस्ट अप्लाई करें फ्लोर के ऊपर एंड इट विल गिव यू अ व्यूज लाइक दिस। फर्दर एडवांटेजेस कि आप इससे प्रोफेशनल आउटपुट भी ले सकते हैं। सो ये वो बेसिक बड़े इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम लोग रेगुलरली अपने इस सारे के सारे सेटअप में, इंटीरियर डिज़ाइन के बिजनेस में, इंटीरियर डिज़ाइन की के प्रोजेक्ट्स में इनके बगैर कोई चीज़ भी हम नहीं बना सकते। अपार्ट फ्रॉम दिस इज प्रोफेशनल लेवल के ऊपर अगर आप चाहते हैं तो मार्केट में यू फाइंड आउट द एक्सपर्ट्स हु वर्क ऑन द कैड, ऑटोकैड एंड 3D स्टूडियो मैक्स। दैट इज ऑलवेज एक एडिशनल टूल्स हैं जो साथ अवेलेबल हो सकते हैं आपके। एंड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क बाय योरसेल्फ ऑन एनीथिंग, यू कैन गेट द बेनिफिट फ्रॉम दोज एक्सपर्ट्स जो कि कैड और 3D के ऊपर मार्केट में बैठे हुए काम कर रहे हैं। दे कैन हेल्प यू आउट। लेकिन बीइंग नॉलेजेबल पर्सन आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर, वो कौन कौन से मोबाइल एप्लीकेशन हैं जो कि आपको हेल्प आउट कर सकती है इन क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग योर इंटीरियर डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स। सो दिस इज द लिस्ट आई थॉट कि मैं आपको शेयर करूँ। अच्छा जी,